A vision without strategy remains an illusion. हम सब ने देखा है विजन कि 10th में कितने नंबर चाहिए, 90 प्लस, 95 प्लस और 100 और 100, बट उसके लिए स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करना बहुत जरूरी है और स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट भी करेंगे और हम उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे टाइमली. वेलकम टू तनेजा क्लासेस. माय नेम इज सागर तनेजा. लेट अस स्टार्ट द वीडियो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई has released a sample paper. उसी सैंपल पेपर से जनरल इंस्ट्रक्शंस निकाले गए हैं और इन्हीं जनरल इंस्ट्रक्शंस को वी आर गोइंग टू read thoroughly. Section A, B, C, D and E, there will be 5 sections. Section A 1 mark, 20 questions, total 20 marks, or 1 to 18 will be MCQs and 19 and 20 will be assertion reasoning. Then section B 2 marks, 5 questions, total 10 marks. There will be internal choice in 2 questions. Section C 3 mark and there will be 6 questions, total 18 marks, and there will be again 2 internal choices. After that, section D 5 marks, 4 questions, total 20 marks, and internal choices again in 2 questions. Section E will be case studies based questions, so 4 mark questions, 3 total 12 marks. These will be this type: 1, 1 and 2, means 2 questions will be of 1 mark and 1 question of 2 marks, and here we do not have any MCQs. So this time we are going to score the marks in case studies with the help of proper solutions. Yes, so there is no options at all, but yes, you will get the internal choice in 2 marks question in each case study, right? So case based questions are without MCQs. Again, I have written over here. So some students were really practicing the MCQ forms of case studies that you have not to practice. Go with the latest pattern and follow up. Okay, next. Now my dear students, we are going to talk about the really important topics chapter wise which we have to cover at any cost for the upcoming board examination 23. Now let us begin with the discussion overall. यहाँ पे रेड मार्किंग में सारे के सारे मार्क्स लिखे हैं कि इस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने आ सकते हैं. ये कुछ मैंने खुद से नहीं लिखा हुआ, बट ये सीबीएसई का सैंपल पेपर बोलता है. नाउ लेट अस डिस्कस चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर. LCM HCF formula, we know LCM into HCF is equal to product of 2 numbers. उसके बेस पे क्वेश्चन. ओके, वर्ड प्रॉब्लम LCM और HCF से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइम, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए. दे कैन आस्क द LCM ऑफ the even prime and the least composite number. So this way question can be asked for 1 mark, because इस chapter में से probability है that we will get a 1 mark question. Definitely you will get a 1 mark question on this. Then 12 and 6 and 4 and ends with 0. So इसके ऊपर भी 1 mark question बनते हैं. So you should go with the concept of this. And irrational number, the most important that you will definitely get. So let us make a very big star on this, a pink star. Yes, you will get this question in board. Irrational number proving. So जो question पता है वो तो करो यार, अच्छे से करो. इसके बाद one more thing, in this chapter we have 1 mark 1 question, 1 mark 1 more question. So why have written separately? 1 mark आएगा MCQ, 1 mark इसका assertion reasoning आ सकता है. CBSE sample paper को देखे तो it may change, but there will be 2 questions of 1 mark और एक question आने वाला है 3 नंबर का उसमें से. Okay. One more thing, chapter number 1 में जो 3 marks question है, that is definitely an irrational number proving question. After this, chapter number 2, polynomials. Polynomials में k की वैल्यू निकालने वाले questions काफी important question होते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि 1 0 of the polynomial is given and you have to find the value of k. हो सकता है कि वो questions होंगे sum of zeros, product of zeros means alpha beta questions. वो ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने. These are not given in NCERT in the form of alpha beta, so वो तुम्हें एक्स्ट्रा बुक से करने ही करने. If you don't know such type of questions, then stay tuned for the upcoming videos जहाँ पे मैं चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाने वाला हूँ. इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर केस स्टडी और 1 मार्क क्वेश्चन. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन आई मीन टू से फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.1. देन फाइंडिंग जीरोस एंड रिलेशनशिप and finding quadratic polynomials, ये exercise 2.2 के questions है, which is very important. इसी concept से ही हम questions कर पाएंगे बाकी सारे, right? Now chapter 3, linear equation in 2 variable. 1 mark 1 question, 2 mark 1 question and 3 mark 1 question, total 6 marks of linear equation. Now concept of consistent, inconsistent, algebraically and graphically, ये question 101% it will be in board 2022 and 23. तो triple star means very important, right? So based on above concept, इसी concept के बेस पे k की वैल्यू निकालने के लिए आते हैं. a b c की वैल्यू मींस इट कैन बी एनी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी.
ओके आफ्टर दिस सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं. सो दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स इज so much important that you will definitely get in board. So very important. STD means speed, distance and time questions, age, digits, 2-digit numbers and all, fractions, income, expenditure type, these all types of questions you have to do. A lot of practice is required for the same, right? Then we have chapter number 4, coordinate equation. इसमें we have 1 mark equation, 5 mark equation. 1 मार्क का क्वेश्चन एक ही होगा, 5 मार्क का भी एक ही क्वेश्चन होगा. लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है? सॉल्व फॉर एक्स मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. यू कैन फाइंड इट बाय either by factorization, but I will recommend you to go by a quadratic formula. Okay, simple, in the simple form, fraction form can also come 1 by x plus 1 by x plus 2 is equal to this. So find the value of x. In the form of root x square plus 3 root 2x plus and all equals to 0. Then algebra form also can come, ax square plus b minus a bracket x minus 2 is equal to 0 whatever. So that form can also come. means ये सारे तुम्हें आने चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोई भी टाइम आ सकती है पेपर में एक्स की वैल्यू निकालने के लिए. काफी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की, वो है नेचर ऑफ रूट्स. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड के प्रूव दैट क्वेश्चंस. मींस नेचर ऑफ रूट्स जहां पे d 0 होता है, d ग्रेटर देन 0, d यू कैन से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और d लेस देन 0. तो उन सब केसेस में k की वैल्यू निकालने के लिए आती है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड इसी के बेसिस पे बोर्ड पे आए हुए क्वेश्चंस भी हैं जो प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. लेट मी टेल यू, ये वही टॉपिक्स हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं और बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, राइट? सो मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टॉपिक्स. After this, word problems, again speed, distance, time, upstream, downstream and many other cases which you have already done in book. Age related question, work and time. Work and time I mean to say 2 water taps running at different speeds, whatever. Okay, so those type of questions. Then the next chapter, AP. In AP we have only one question and that is also a case based question. अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा कि नहीं आएगा, दैट वी कैन नॉट से, बट यस प्रोबेबिलिटी इज मच मोर फ्रॉम एपी. पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है एंड अभी सैंपल पेपर में एंड पिछले साल भी क्वेश्चन आया था. सो एपी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर केस स्टडी. सो बट एज वी हैव टू प्रिपेयर, we don't know, only case study will come from this chapter or they may even change a little pattern. So we have to prepare for the other topics also. The topics are find x if terms are in AP. दिया होगा क्वेश्चन में कि AP में सीरीज है, सीरीज AP सीरीज है और उसके अंदर ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो वहां पे A B C K किसी भी वैल्यू निकालने के लिए आती है. ओके, AN SN obviously these are the formulas जो तुम्हें पता होने चाहिए. nth term from end, middle most term क्या है, ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं. ओके, फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी. ओके, फाइंडिंग AD nth टर्म, AD या nth टर्म कोई भी टर्म निकालने के लिए आएगी. अगर क्या दिया होगा क्वेश्चन में, AN एक्सप्रेशन दिया होगा AN का 5 + 2n, SN का एक्सप्रेशन दिया होगा 3n² + 2 whatever like this. Okay, is given in question. Then ये एक्सप्रेशन मींस ये फॉर्मूला यू शुड नो वेरी वेल. AN = SN - SN - 1. इन्हीं AP के कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग वी कैन गेट प्रूविंग क्वेश्चंस आल्सो. और वर्ड प्रॉब्लम्स जो अगर आती हैं तो वो केस बेस्ड क्वेश्चंस बन के ही आएंगे फिर, जो मैंने तुम्हें बताया है. ओके, रेस्ट वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली वी नीड द कंसेप्ट्स ऑफ AP. नाउ ट्रायंगल्स. इन ट्रायंगल्स वी हैव 1 मार्क क्वेश्चन 3 and 2 mark question only 1 and 5 mark question only 1. Total 10 marks of triangles you may see in your upcoming board exams. So this is according to CBSE sample paper, but they may change a little, but we know that if this much weightage is given in sample paper, so it will be nearby this. So 1 mark question based on BPT or similarity, as we have only 2 concepts, but these both topics are important for 1 mark. You should know both of them. Some important concepts of similarity not given in NCERT, that is also important. We will discuss in our upcoming videos, as I have promised you. Then BPT Thales theorem is important, even in CBSE sample paper it is given, and we do not have much theorems this year, so they are limited theorems. You should practice these theorems and it should be on your tips. Okay, free marks if we get it.
Then question based on shadow, we have a question in NCRT in the examples. So those questions, the shadow of the girl and shadow of the tower, those type of questions are very important this time. A special efforts required for question out of NCRT. Yes. So ये chapter काफी vast chapter है obviously, but half of the chapter is already out of syllabus. So इसलिए काफी कम questions हो चुके हैं already. बट स्टिल हमें एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ेगा और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस है जो हमें करने हैं टू इन ऑर्डर टू स्कोर 10 out of 10 in this chapter. Next, coordinate geometry. In this we have one question of 1 mark, one question of 1 mark, one more means one MCQ and one assertion reasoning. There is a probability of this. Then 4 mark, one question which may be case based. See, case based के लिए भी I have told you AP. Polynomial or quadratic mix up, and we have the coordinate geometry, and obviously for case study we have the some application of trigonometry, right? Now in coordinate geometry, questions based on concept of equidistant. We have the indistance formula. हमने बहुत questions किए हुए हैं equidistant के ऊपर, तो वो तुम्हें करने हैं. Basic concepts of Cartesian plane. So Cartesian plane we all know. एक्स एंड वाई एक्सिस जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं और उसके अंदर इससे रिलेटेड कांसेप्ट जरूर पूछे जा सकते हैं इन 1 mark, बट राइट. देन नॉलेज ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, सर्कल, ये सारी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन यू माइट हैव डन क्वेश्चन इन एनसीईआरटी ओनली जहां पे सारी शेप्स का यूज किया गया है. प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ रेक्टेंगल with the help of the coordinates we have proved. So you should have the knowledge of this. Then section and midpoint formula obviously is the main case. Now trisection questions are important. Many a times it has come in board, and this is one of the most important. I have made triple star. Okay, parallelogram के ऊपर questions है, diagonal bisect each other, circles के ऊपर question है, radius diameter के, ये सब important है, very important question. Find K if point lie on line this. So this is an important question from the optional exercise. So optional exercise के नीचे generally लिखा होता है these exercises are not from examination point of view, but it is not like this. You have to practice the exercises in order to get 100 on 100. Now case based questions के लिए ये chapter काफी important chapter है, काफी important है, हर बार इसमें case studies आती है. So you can mark it. Yes, I will do this for case study. Trigonometry. In trigonometry we have 3 questions of 1 mark, 1 question of 2 mark and 1 question of 3 mark. Total of 8 marks we have in trigonometry. Yes, triangles 10 marks and trigonometry 8 marks. Total 18 marks from these 2 major chapters. Now question on angles. As we have the exercise 8.2 on angles 30, 45, 60, 90, 0 degree. So on that question may come in 1 mark. Then T ratios, trigonometric ratios is also important for, I get for 1 mark because we have 3 questions from 1 mark. Then identities based question, obviously that will be the 3 mark question, and need to go beyond NCERT. Yes, for identity based questions you have to go out of NCERT. First NCERT on tips. All the questions of NCERT are the base, and with the help of that we need to go beyond that, and we will be doing some very important topics, 1 mark, 2 mark, 3 marks of this chapter when you will be getting the video of this soon, right? Then extra question need to practice that I have already cleared it to you, that especially on identities. Okay, let's go further. Chapter number 9, some application of trigonometry, that will come in case study. Yes, you can mark it. This chapter will come definitely as case study. This will be only 1 question in 4 mark. Now very important for case study, I have mentioned this. NCERT question on tips. NCERT question are the real base for this chapter. Real base. Even you may get the same questions just by altering the digits in your paper. The case study may be based on the same question, right? Now questions on pole, stars, kite, broken tree, statue, ships, balloon. So question can be made easily on this case study. Now question based on aeroplane, boat, car, STD, again speed, distance, time question, aeroplane, boat, car, bird, especially the question on cloud and summit, that mountain one question. So there are some important topics which will not, you have not to learn these questions. Obviously these include some important concepts. Those concepts are really important to solve the case study. Yes, we will be practicing more and more case studies from this chapter. Now the next,
Circles. One question of 1 mark, one question of 2 mark, one question of 3 marks, total of 6 marks from circles. Both theorems you have to do, very easy theorems. NCERT questions should be on tips again for this chapter, including the example second and third. Most of the times the question has come from NCERT, but now we need to go beyond NCERT for this chapter 2. So extra question need to be practiced. That will be I'll be telling you in my upcoming videos. Now chapter number 11 is deleted. Now chapter number 12, areas related to circles. 2 questions of 1 mark and 1 question of 2 marks, total of 4 marks only. And the most important topic from the chapter according to me this year will be question on minute and hour ends of clock and areas of sector segment. That is the basic concept that you can do with the help of formulas. That's it. Perimeter. Yes, the perimeter of sector. Students get confused in this. Perimeter of sector, perimeter of quadrant, and perimeter of D, that is protector. So that you need to do. And after that we have the shaded region. Shaded region topic is in syllabus or is out of syllabus. There were many rumors on this, but CBSE का सैंपल पेपर आया और उसके अंदर शेडेड रीजन का क्वेश्चन भी आया, इसलिए हमने ये टॉपिक करना है कवर. इसके अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से. Now the next chapter we have volume and surface area. In this chapter also 2 exercise. The major third exercise, the very important exercise, is already out of syllabus, which comprises of many questions. But now we have one question of 1 mark and one question of 5 mark. Yes, we have a question of 5 mark from the chapter. Formulas should be on tips. एक बार मैं formulas बता दूं कौन से formulas तुम्हें सब याद होने चाहिए. These are CSA, TSA, volume, area of base, perimeter of base. Which base? It can be the base of cone, cylinder, means circular base, right? Then we have perimeter of cube, cuboid, length of diagonal of cube and cuboid. Yes, please do it. 1 mark questions में आया हुआ है. Even in CBSE sample paper also it is given. Area of ring, volume of material used. Volume of material used in making a cylinder. This type of questions. Cylinder, sphere, hemisphere. Area in case of hollow cylinder. Hollow cylinder के अलग से ही area निकलते हैं, right? Inner and outer, total. After that questions like combination of solid. Question कैसे होंगे? Combination of solid. Hemisphere है, उसके ऊपर cylinder है, cylinder के ऊपर cone है. फॉर्मेशन चल रहा है और उसमें हमें एरियाज निकालने हैं, वॉल्यूम्स निकालने हैं. कभी कभी वो सॉलिड में से कुछ स्कूप आउट कर लेते हैं और उसमें रिमेनिंग सॉलिड्स बन जाते हैं. उस रिमेनिंग सॉलिड्स का एरिया भी आ सकता है, वॉल्यूम भी आ सकती है. देन फाइंडिंग नंबर ऑफ लेड शॉट्स, ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज में. तो जब देयर इज अ कंटेनर और कंटेनर के अंदर कुछ बॉल्स डालिए, कुछ पानी बाहर आ गया, ये कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस 2022-23. नाउ देन वी हैव स्टैटिस्टिक्स. Statistics में we have 2 questions for 1 mark and 1 question of 5 marks. Total 7 marks of statistics. Formula should be on tips. Number 1. After that, questions on finding missing frequencies. So very important question. Even ये just put a tick. 5 mark question आना ही आना है हमारे पास पेपर में. So 5 mark 1 question will be missing frequency. So I have made 3 stars on median and 1 star on mean because ज़्यादातर question 99% मीडियन के ऊपर ही आए हुए हैं. बट यू नीड टू डू बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? एम्पेरिकल फॉर्मूला mod is equal to 3 median minus 2 mean. इस फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन सैंपल पेपर में अभी भी आया हुआ है and this is one of the important. Then the series conversion, more than less than series. Then we have inclusive to exclusive जिसमें हम 0.5 प्लस माइनस करते हैं और 0.5 ही को क्यों करते हैं ये कंसेप्ट भी तुम्हें पता होना चाहिए. मीन और एपी का मिक्स कंसेप्ट आ सकता है. So that I'll explain you with the in our that yes upcoming video. So probability, 1 question of 1 mark and 1 question of 3 mark. काफी क्लियर है. सबसे पहले probability of an event plus probability of not happening an event is 1. तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. That will only obviously किसके लिए? 1 mark के लिए. Then question on cards. Yes, cards. 52 cards. Then उसके अंदर face cards के ऊपर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. Then coins, it can be a 1 coin, 2 or 3 coins, maximum 3 they can go. Then dice, 1 or 2 throws or 2 dice are thrown at once. Good knowledge of even, odd, prime, co-prime, composite, these are factors, multiples, doublet, at least, at most, exactly. ये कुछ terms हैं और उसके ऊपर ये सारे टाइप ऑफ नंबर्स जो तुम्हें क्लियर होना चाहिए बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफी बार बोर्ड्स में. ये सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम आस्क्ड क्वेश्चंस आर दिस कार्ड्स, कॉइन्स, डाइस, राइट?
So just complete it in this way so that we can achieve 100 on 100 result. Thanks for watching everyone. I hope you like the video and you have got the useful content out of it. बस अब क्या करना है? Like, comment, subscribe and share the video with your friends so that they can get the notification that yes, I'm going to start with my topic wise discussion in the next videos. So stay tuned. I'll be right back. Bye bye.